भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भौकाल पूरी दुनिया में 2014 से बुलंद हुआ। विदेशों में जिस तरीके से उनका स्वागत होता है वो सब ने देखा है। कोई उन्हें बॉस कहता है तो कोई उनके पैर छूता है, जो कि ये दर्शाता है कि भारत का भौकाल हर जगह टाइट है। ऐसे में पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर उनके स्वागत के लिए तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन स्पेशल डिनर पर उनका इंतजार कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी तैयार हैं। जानकारी देते चलें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वहीं भारत में भी पूरी तैयारी हो चुकी है और पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए सब प्लान तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक धाकड़ बयान दे दिया है, जिससे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन टेंशन में आ गए हैं। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा, मैं अभी यह नहीं बता सकता कि क्या क्या चर्चा होगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा करते हैं तो यहाँ हमारे भारत के संबंधों को आगे ले जाने के लिए होता है। मैं समझता हूँ कि यह एक वैश्वीकृत दुनिया है, इसीलिए अगर कुछ होता है तो इसका दूसरों पर प्रभाव हो भी सकता है और नहीं भी। हम इसे अपने हितों के लिए अपने संबंधों के नजरिए से देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान के जरिए यह साफ कर दिया कि पीएम मोदी के इस अमेरिकी यात्रा से दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे, जिससे पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ सकती है। वहीं अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने इस यात्रा को लेकर बयान देते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी वार्ता के दौरान 5 व्यापक क्षेत्रों स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण ऊर्जा, शिक्षा और रक्षा पर चर्चा कर सकते हैं। उनकी चर्चा के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान से कई चीजें साफ हो जाएंगी। जिन मुद्दों पर चर्चा होगी वो सभी संयुक्त बयान में उभर कर सामने आ जाएंगे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर कई बड़ी डील होने वाली है। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि पीएम मोदी की ये यात्रा भारत के संबंधों को आगे ले जाने के लिए है। देखना होगा कि दोनों देशों के बीच सहमति कौन कौन से मुद्दे पर बनती है और कितनी डील फाइनल होती है। बहरहाल अभी सुनिए पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने क्या कुछ जानकारी दी है। Our presence here this afternoon for the special briefing of Honorable Prime Minister's upcoming visit to the United States and to the Arab Republic of Egypt. First, about the United States, Prime Minister is visiting US on 21st through 23rd of June at the invitation of His Excellency President Biden and the First Lady Dr. Jill Biden. What I would do is give you a brief run overall structure of the program outline, try to sketch a bit of context, key elements which currently resonate in the relationship, and then go on to speak about very briefly about the program in Egypt. Firstly, this will be Prime Minister's first official state visit to the United States. PM has earlier visited US roughly 6 times, both in bilateral capacities as also for multilateral events. First, about the program. The first leg of his program in the US is in New York, which starts on the morning of the 21st. With celebration of the International Day of Yoga at the UN headquarters in the morning of the 21st. You would recall that United Nations General Assembly had adopted a resolution proclaiming June 21st as the International Day of Yoga. While in New York, Honorable Prime Minister will also meet a cross-section of prominent personalities and leaders. From there, he departs for Washington on 21st itself, where his program for the Washington leg commences. On the first day of his arrival in Washington, D.C. on 21st, the first key engagement would be an event that is focused on skilling for future,
which essentially would try to bring out the key complementarities and the objectives that both systems seek to promote and achieve in the field of skilling and capacity building. On the same day, on 21st, there is expected to be, there will be a private engagement between President Biden and Prime Minister. On 22nd June, which is the second day of the program in Washington, that's the day of formal bilateral meetings, essentially would have 4 or 5 key components. The first component being the ceremonial welcome at the White House. The second component being a set of bilateral meetings between the two leaders as also the accompanying delegations. The third component is Honorable Prime Minister's scheduled address to the US Congress and the congressional reception thereafter. And the concluding component for June 22nd would be the ceremonial state dinner hosted by the Honorable President and the First Lady in honor of Prime Minister Shri Narendra Modi. The day 3 of the Washington leg, which is June 23rd, Prime Minister's program again would have 4 or 5 key components. The first being his interaction, one-to-one interaction with select CEOs spread throughout the day. Thereafter, Prime Minister will also be hosted by the US Vice President and Secretary of State Anthony Blinken at the State Luncheon, which is part of the official state visit. Prime Minister will then interact with prominent professional personalities as also leaders from cross-section of the society at an event at the Kennedy Center. Prime Minister's last engagement in Washington, D.C. will be an interaction with the community leaders immediately after the Kennedy Center event, whereafter the Prime Minister will depart for Egypt.